हाय एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? आई एम जस्ट चेकिंग फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर एंड एवरीवन वेरी वार्म वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। एंड बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन होगा मार्केट को देखने के बाद। आई एम श्योर यू माइट बी थिंकिंग कि क्या हो रहा है यार, निफ्टी इतना नीचे था फिर पुल बैक आया, क्या ये मार्केट बाय में है या क्या ये मार्केट सेल में है? क्वेश्चन तो वही है। लेकिन एक चीज पे आपने ध्यान दिया कि नहीं? आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव फोकस्ड एंड अंडरस्टूड वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। 18,293, anyone remembers that level? 18,293, do you remember those levels, guys? uh, uh, जहां पर से निफ्टी बार बार कोशिश कर रहा है जाने की, लेकिन जा नहीं पा रहा है। 18,293 is the level. That's the Gann square of 9 level from where we have observed market is failing again and again and again to just go in any specific direction. So it's great to see all of you over here. Gaurav, great to see you again here. Satish, Gann has the magnetic level, right? And Chandra Prakash, Chandra Singh, Atul Mishra, great to see you also here. Atul, I think आपने चैट पे कुछ पूछा था, and if I remember it correctly, कल रात को बातचीत हो रही थी हमारी। तो चलिए, बहुत ही भवन, ग्रेट टू सी यू ऑल्सो। नालिनी, फैंटास्टिक। तो सर, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि मार्केट में करना क्या है, बाय करना है कि सेल करना है। And we just want to know first, before moving on further, I want to take a very very quick poll, and I want to ask you, what is the Nifty trend in the coming week? I'm taking this poll, guys, and if you are there on my YouTube channel, and if you want to join with me on the Zoom platform, I am just copying the link and I am sharing it across with you also. आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे चैनल पे, यहाँ पर है लिंक। तो इंश्योर करिए आप मुझे ज्वाइन करके यहाँ से देख पाओगे और पार्टिसिपेट कर पाओगे। Also one more thing before I move on, I'm ending this poll very quickly now. Nifty trend in coming week, बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम है। यहाँ पर लग रहा है 48% people are expecting up and remaining 54 expecting down। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जहां हाफ ऑफ द पीपल आर बुलिश, हाफ ऑफ देम आर बेरिश। नेट मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। दिस इज अ साइन दैट मार्केट इज स्टक इन अ बैड रेंज। आई एम एंडिंग द पोल वेरी क्विकली नाउ। आई जस्ट शेयर अक्रॉस द रिजल्ट्स फॉर योर रेफरेंस। मार्केट इज जस्ट स्टक इन अ रेंज। इट इज नॉट गोइंग इन एनी डायरेक्शन राइट नाउ। चलिए, स्टॉप कर रहा हूं मैं ये शेयरिंग। एंड देयर इज सम चेंज इन द Zoom प्लेटफॉर्म, इट सीम्स लाइक दैट। तो अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आपको लिंक पे जाना होगा, साइन अप करना होगा और फिर ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, इफ यू आर देयर ऑन यूट्यूब, if you want to be on Zoom that way. So let me now share across the chart. Let me talk about, I'm not going to spend a lot of time because tomorrow I am going to be lot of energy starting for mentorship tomorrow morning. So I am going to save that energy for myself. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमने आज ही एक सॉलिड वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, जो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं मेरे ऐप पे। आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल का ऐप है, आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए ऐप, बिकॉज वहां पर हम लॉन्च करेंगे कि कैसे 1 घंटे में खाली ट्रेड सेटअप है, ट्रेड सेटअप कुछ भी नहीं, कैसे उसे बैंक निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है। तो वहां पर नजर बनाए रखना। सो लेट मी नाउ शिफ्ट gears to the chart. I'm just sharing my chart. 1 second. Where is my window gone? Here is the trading view screen. And देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। बहुत ही सिंपल वे से we will also apply on the volume profile. So I'm going to look at volume profile, is also crucial for me right now. And I'm also producing short videos of 10 minutes every day at 7 on YouTube. So ensure you have subscribed to that channel so that you can get access to those videos and see those videos are life-changing experience for you all. I'm doing it for you all. Let me now share the screen here. ये रहा मेरा screen. I'm going to hide myself from here and just a second. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं
Shashank Yadav is saying, sir, I have made the biggest profit ever today in second half by time trading method. Thank you so much, Shashank. It was fantastic to have you in the master of cycles and time trading आप use करके biggest profit ever. That's the power of time cycle is what I say. Okay, that's the power of timing the market and you have just witnessed it. So ये bank nifty chart है. So ignore this bank nifty chart. I'm just going to just one moment. I'm just trying to play around with this Zoom app. Lot of things have changed here. तो थोड़ा सा टाइम जा रहा है मुझे कोई चीजें यूज करने के लिए. यहाँ पर मैं निफ्टी डाल रहा हूँ अभी. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? So what you are seeing on Bank Nifty right now, I was talking about, as I said, I was recording a one course which is on Bank Nifty strategy, which uses Bollinger Bands, which uses price action and uses KST as an indicator. Superb method है जो मैंने अभी just record किया. I'll share it across on the app soon. So फिलहाल तो हम देखेंगे कि क्या चल रहा है निफ्टी पे. I'm going to be looking at the daily chart of Nifty right now, and overall if I'm looking at this chart, बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइंग इमर्ज हुई है लो से. लेकिन एक चीज अभी भी क्लियर है, यहाँ पर ये जो कैंडल थी. Okay, if you are following me on Twitter, I have talked about it multiple times. This was the candle which closed below the prior candle low. High is below the prior high, low is below the prior low, and इसने 0.25 okay, उतने ही मार्जिन से क्लोज किया, लेकिन किया है, which means यहाँ पर निफ्टी पे एटलीस्ट मार्केट फिलहाल सेल ऑन राइज पे है एज पर दिस सिंपल कैंडलस्टिक मेथड. 0.25 से क्लोज किया, लेकिन इसने फिर भी कल के लो के नीचे बंद किया था. आज का जो कैंडल है वो भी कल के हाई के नीचे है, आज की जो लो है कल के लो के नीचे है. तो मंडे को 18,395 निफ्टी को क्रॉस करके क्लोज करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि अप ट्रेंड फिर से शायद शुरू हो गई है अपर एंड ऑफ द बैंड तक. Are you clear? Are you understanding this thing very clearly? So what I am talking about right now is looking at this daily time frame chart. So along with that, now let's just look at what is happening on 1 hour. And इसके साथ में अभी हम डालेंगे बॉलिंगर बैंड्स को नहीं, इचिमोको क्लाउड को, और देखते हैं क्यों मार्केट ऐसा नीचे जाता है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. और वीकली चार्ट भी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीकली. क्लियरली थैंक्स किरण फॉर रिमाइंडिंग दैट वीकली अभी भी पॉजिटिव है. तो वीकली के लिए लो ब्रेक करना आज का जरूरी है, वो देखना होगा. डेली पे बेरिश है, 1 आवर पे बुलिश है. मतलब नेट क्या होगा मुझे बताओ, नेट क्या होगा. ओके, सो बहुत ही क्लियर है ना कि निफ्टी का पाथ अहेड लुकिंग एट सिंपल पावरफुल मेथड ऑफ इचिमोको along with price action is what I am doing it right now. Sideways, fantastic भावेश, क्योंकि यहां पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि ट्रेंड वीकली पे पॉजिटिव है, डेली पे नेगेटिव है, आवरली पे पॉजिटिव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कहीं पे जा नहीं रहा. तो इचिमोको क्लाउड जो इंडिकेटर है ना, वो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, एंड दैट्स व्हाई सेलिंग ऑप्शन इज मेकिंग मनी. सो अगर मेरा कल का ट्वीट पढ़ा था किसी ने, लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय ट्वीट इन केस यू डिड नॉट सी इट. आई विल शेयर अक्रॉस माय ट्वीट राइट नाउ अलोंग विथ यू, व्हिच इज गोइंग टू शेयर अक्रॉस कि क्या लग रहा है मार्केट का, क्या था कल क्लोजिंग के जस्ट वक्त मैंने ये ट्वीट किया था, क्लोजिंग के थोड़ा बाद में शायद. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट अक्रॉस इन अ सेकेंड विथ यू ऑल. एंड यहां पर अगर आपने वो ट्वीट देखा होगा, देखिए एक निफ्टी मैग्नेटिक लेवल में शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, और देखिए वो ट्वीट हो गया वायरल.
तो क्यों ना आप भी उसे शेयर करिए, लाइक करिए। यहाँ पर ये जस्ट मैंने देखा, मैं तो ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, मैं तो मार्केट को देख रहा था। निफ्टी बैक टू 18,293 मैग्नेटिक लेवल। इफ यू आर फॉलोइंग माय ट्वीट्स यू विल नो द पावर ऑफ गैन एंड लुक एट 77। सो जो कल के दिन पे हमने ट्वीट किया था वो क्या था, मतलब मैंने क्या ट्रेड लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। एंटिसिपेशन में लिया था, क्योंकि बहुत क्लियर था कि मार्केट गैप से जाता है, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द मूव है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री दैट मोस्ट ऑफ द moves that has happened, so I'm just checking वो कहाँ गया। Most of the moves that happens has been happening with gaps very 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 clearly. So अगर आप एंटिसिपेट कर पाओगे तो ही आप वो मूव को कैप्चर कर पाओगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी हियर वेयर इज माय ट्वीट गॉन। ओके या ये रहा। Nifty closing below 340 turned my short term time on the sell side, closing by 25 points, 0.25 also. So I've shorted calls, bought few puts at a good risk reward. Market moves in gaps, that's why closing was tough. I anticipated. तो क्लोजिंग टफ थी, इसलिए एंटिसिपेट करना जरूरी है इस मार्केट को, और बहुत जरूरी है। और कल जो लेवल ब्रेक किया उसके बाद आज लो बना। ऑलरेडी जो ऑप्शन सेल किए थे वो सब डीप इन द मनी, सॉरी डीप प्रॉफिट में, इन द मनी नहीं, डीप प्रॉफिट में थे। और पुट पे थोड़ा बहुत बना, पुट बाय करने पे ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि ये सेलर्स मार्केट ही है, रेंज में है। वो चीज यहाँ पे मेंशन की थी मैंने। दैट इज व्हाट यू कैन क्लियरली see it there. So now I'll go back to the chart. So ensure you are following me on the Twitter. And यहाँ पर मैं ये चार्ट पे आ रहा हूँ, 15 मिनट चार्ट पे मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, विक्स इज वेरी लो, पुट्स नॉट मूविंग अप, यस दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन विक्स इतना लो है कि ऑप्शन सेल करने में थोड़ा डर लगता है पुल अप ले, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत कम है। और पुट ऑप्शन तो मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि इतने कम वोलेटिलिटी में पुट बेच दिया, निफ्टी अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो विक्स बढ़ेगा, पुट का प्राइस डबल हो जाएगा। डेल्टा ऑलरेडी काफी हाई चल रहा है क्योंकि हमें पता है कि वोलेटिलिटी लो है। तो ऑप्शन में ट्रेड करना है तो स्प्रेड बना के करो, या कॉल ऑप्शन फिर भी सेल कर सकते हो। यहां पर अगर हम देखेंगे बहुत क्लियरली, दिस इज Nifty on a 15 minute chart. What do you make out? Guys who are knowing about Ichimoku cloud, what do you see on this chart? Please tell me. आपको इस चार्ट पे क्या दिख रहा है? What is the view? Simple. Don't confuse. देखो कहां पर है प्राइस। I want you to interact with me. तो मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करोगे चैट पे तो पता ही नहीं चलेगा। ओके, निफ्टी नीचे है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस है 18,360 का, बहुत क्लियर है। ठीक है, एक चीज पता चली कि ओवरऑल मार्केट है नीचे 18,360 के रेजिस्टेंस पे। अभी आपको मैं पूछ रहा हूं यही चीज 1 आवर पे क्या है? ओवरऑल मार्केट है ऊपर, पॉजिटिव। इसका मतलब मार्केट में जो इंडिकेटर फिलहाल काम करेगा वो कौन सा इंडिकेटर काम करेगा? बॉलिंगर बैंड्स। तो हमने इचिमोको को डाला बैक सीट पे। फैंटास्टिक विशाल नीलेश, इट्स ग्रेट टू हैव यू गाइस मेंटीज हियर, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। एंड यहां पर हमने देखा कि इंडिकेटर के बेसिस पे फिलहाल इधर है, अगर इसके ऊपर मिड के ऊपर कल बंद होता है तो मे बी वी माइट गो बैक टुवर्ड्स दिस लेवल। So I am not buying the breakout, I am buying earlier in anticipation or selling earlier. अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है निफ्टी पे, that will be a classic opportunity to sell. और क्लोज तो देखो कहां हो रहा है, 18,293। ओके, सही चीज है, वहीं पे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। 18,293 ही काम कर रहा है। Shri Krishna is saying I'm using Bollinger Bands and candlestick 3 candlestick rule. Fantastic, Shri Krishna. Sandeep Kumar is using Bollinger Bands. लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप वो जो मैं एक घंटे का वीडियो जो लॉन्च करने वाला हूं, जो बैंक निफ्टी के ऊपर बॉलिंगर बैंड्स, प्राइस एक्शन और केएसटी को लेके, बहुत ही शानदार वीडियो है, तो वो देखना नहीं भूलना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ गया चार्ट मेरा? ये रहा। Now what I want to check along with this,
I want to check what is happening on very clearly what is happening on volume profile, because volume profile will give us a clear cut support resistance area. So I'm going to go on go charting right now. Just a second. Nifty का futures chart मैं यहाँ पर डालूंगा. I'll share my screen also with you all. The bank Nifty strategy video, which is not option selling. No, that is a pure future strategy that I have talked about. Let me share my screen. But we are launching that as a course because it has something very phenomenal. So वो ऐप पे मिलेगा, आशीष कैल ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप. Are you able to see this screen of go charting, everyone? Okay. ये अभी फिलहाल लोड हो रहा है. So just a second. Let it load. और यहाँ पर गो चार्टिंग के ऊपर इनकेस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन गो टू गो चार्टिंग एंड चेक फॉर दैट. ओके, जस्ट 1 second. आई एम चेकिंग समथिंग आउट. What you have to observe very clearly over here is that you can't just trade basis of only one thing. लोग बोलते हैं ना खाली एक चीज मैंने यूज किया लाइफ में और उसके बाद में नहीं कुछ यूज करना है. नहीं, वैसा नहीं है. I use wave theory, I use time. You need to club it with price action. That is very crucial. Okay, that is very, very crucial, and without that price action you will not be able to trade in the market. Just a second. Yeah, screen is not visible. I'm just checking. मेरे zoom पे कुछ issue है. Are you able to see the screen? Go charting का screen जो मैंने share किया आप लोगों के सामने. You can see the screen, right? I'm just struggling with zoom today. Some or the other problem is happening, and that's what I'm trying to figure out. एक ही minute. I'm just checking. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेयर डू यू थिंक इज द वॉल्यूम हैपनिंग? वॉल्यूम कहां पर दिख रहा है आपको, हो रहा है कहां सपोर्ट है? कैन यू शेयर अक्रॉस? आई थिंक स्टिल some are still not able to see the screen. I'm not sure why. I'm just trying to figure that out. Where do you think is the volume happening on this chart? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्राइस एक्शन एरिया वॉल्यूम के बेसिस पे डिराइव करना इज समथिंग very, very, very important. Okay, so keep that in mind. Just a second. $18,270, 18,400. Great, guys. So I'm seeing a lot of levels, and I think I now can, yeah, I can annotate. I was searching for annotation and वो हो नहीं रहा था. अभी फिलहाल वो चल रहा है वापस से. So sorry for me pausing around. I was struggling with this platform today. यहाँ पर annotation का कुछ issue चल रहा था. I was not able to mark it again between और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये level जो है, this is Nifty futures. This is where highest volume has taken place. This is volume profile as per session. और ये level बहुत ही important है. मल्टीपल, मतलब ये लेवल के आसपास ही पूरा पूरा मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, भले ही ऊपर जा रहा है. नॉट एबल टू क्रॉस दैट. दिस इज फ्यूचर्स लेवल 18,414. सो 18,415, 18,415 is the level where it is taking extreme high resistance. So Nifty on basis of volume profile gives us the price action area. इसके साथ में, so
most important level is 18,415 on futures. Where is the support you think is there? सोचो, यहां पर है सपोर्ट मार्केट का, जो गैप का एरिया है। पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज दिस नाउ 18,100. ओके, 18,100. इज इट क्लियर? नाउ आज के दिन में क्या हुआ ये देखेंगे। आई एम गोइंग टू जूम इन। इसके ऊपर वी वैप भी लगा रखा है मैंने। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, दैट्स अ वी वैप लाइन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का लाइन है। सो प्राइसेस आर अबाउ by the final hour, the prices went above this candle, closed around here, found support near this price action area, okay, and bounced back from there. आज के दिन का very interesting observation is what the highest volume. So let me just zoom in. Highest volume profile आज के दिन का is not down, it is happening here at 18,344, जहां पर निफ्टी क्लोज किया, फ्यूचर्स है ये। तो जहां क्लोज किया वहां पर समथिंग हैज मेजर ट्रिगर्ड। कैन यू सी दैट? समथिंग मेजर हैज हैपेंड at this level. This is the highest volume during the day, and coincidentally this volume is also the prior lows that you see on the screen here. See this, which means the closing has been to the level which is nothing but 18,293. Closing is simply 18,293. Guys, this is futures I am talking about. The level that you are seeing is around this. Can you now see the power of Gann? If you check my last week webinar, it was why 18,2, now at 93 is going to act as magnet. If you check my today's webinar, why 18,293 is acting as a magnet, और कितना प्रूफ चाहिए यार, ये लेवल चलता है। It acts as a mean reversion, not as a hurdle, not as a support. मीन रिवर्ट हो रहा है, प्राइसेस इसके ऊपर जाता है, इसके नीचे जाता है, अल्टीमेटली एवरेज यहीं पे मेंटेन हो जाता है। दैट इज हाउ इट्स वर्किंग। और इस मीन रिवर्ट लेवल को अगर ब्रेक करना है तो मुझे था कि 390 के ऊपर जब जाएगा स्पॉट पे, मतलब 450 के ऊपर शायद ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाया, और इसके नीचे भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। सो अभी ट्रेड कैसे लेना है? अभी ये रेंज बाउंड मार्केट है, ट्रेड लेने के लिए ऑप्शन सेलिंग ही पैसा बनेगा, भले ही विक्स लो है। बुल कॉल स्प्रेड मैंने ट्राई किया, नहीं बना पैसा, ऑप्शन सेलिंग से ही बनेगा। विक्स लो है, हेज करके काम करेंगे तो पैसा बनेगा। तो आपको ऑप्शन सेल करना है और हेज करना है, क्योंकि विक्स बहुत लो है, खास करके पुट साइड पे। और यहां पर रेंज बाउंड मेथड अपनाना है, विच मीन्स दैट यहां अगर सपोर्ट के पास आके बाउंस बैक हो रहा है तो कॉल सेल करना है, सॉरी पुट सेल करना है। यहां पर मिला और रिवर्स हुआ तो कॉल सेल करना है और एंटिसिपेट करना है। मैंने कल एंटिसिपेट किया था यहां पर कि ओवरऑल मार्केट नीचे जाएगा, तो ये एंटिसिपेट किया तो ट्रेंड मिल गया और पैसा बन गया ऑप्शन सेल करने में। तो जो ऑप्शन बेचा था करीबन 70-80 रुपीज पे, वो ऑप्शन का वैल्यू आज हो गया था 23-24 पे, और ऑप्शन जो मैंने सेल किए थे अराउंड 34 पे, उसका वैल्यू हो गया 23-24, तो पैसा तो बना। समझ में आया? ट्रेल करने में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस थिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग हाउ यू हैव टू लुक एट दिस मार्केट। लेकिन जो पुट्स बाय किया था कुछ नहीं हुआ, भले ही मार्केट फेवर में तो भी पैसा नहीं बना, बिकॉज नहीं चल रहा है वो। तो ओवरऑल what is the crux of whatever I have discussed so far? The overall move of the market is range bound. If we break below the low of today, the downtrend will start. For upside, 18,440 on spot has to be moved, then the up move will start. Until then, the magnet works. That is what I wanted to share across, guys. So look at the magnet. I'll just very quickly share across my screen here again on TradingView. So
आवरली भले ही क्लोज ऊपर हुआ निफ्टी का, लेकिन अभी भी डेली कैंडल बेरिश है। तो मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मंडे अगर लो निकल गया तो वीकली लो भी ब्रेक होगा, तो वीकली सिंक में थोड़ा आएगा, डेली सिंक में आएगा, बैंड्स ब्रेक होगा और मैग्नेट से मार्केट दूर जाएगा, तब भी ट्रेंड शुरू होगा। एक ये ऑप्शन है। अगर गैप अप हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वेट करना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर निकालने के लिए। ये लेवल के ऊपर निकला, टाइम को देखना होगा। आज टाइम सेल में था, ब्रिलियंट चला। मंडे का टाइम देखेंगे कि क्या होगा और उस हिसाब से फिर ट्रेड लेंगे, टाइम, प्राइस और गैन को कंबाइन करके। तो इस तरीके से मार्केट का व्यू। एनी क्वेश्चंस गाइस? आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। आर यू एबल टू सी दिस थिंग? And one more thing I just wanted to tell you and inform you, which my team said, we have launched a mentorship program which is starting tomorrow. We have launched an EMI payment option. You can just simply go on the link here and you can use an EMI option of 24 months also and you can pay. So करना क्या, यहाँ जाना है आपको mentorship के लिए, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है। एक बार आप क्लिक करोगे तो इट विल आस्क यू फॉर योर डिटेल्स, मोबाइल नंबर। वंस यू पुट दैट, you can go to the checkout page here. From this page that you are seeing on the screen right now, on this page there is an option of an EMI. Once you open that option, you will be able to see more banks. Once you click that, you can see all the banks that are being listed here. A lot of banks. This we did it for you all. We tied up, and यहाँ पर option है 24 months अगर आप करते हो तो you have to pay 7,000. The reason we came out with this is many of people who wanted to be a part of this wonderful journey were not able to do that. So हमने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए, and that's how I did it. So I'm just sharing it across कि कैसे आपको करना है. We tied up with someone and we are trying to make use of it if it is useful for you. I mean, just for you I'm doing it. So where do we get the time cycle of the various stocks? So I'm just come to this chart. The time cycle of the various stock is Karan and Prabhakar, you are there in the mentorship batch, right? We will do that. Let it start tomorrow. We'll take one step at a time. Don't worry on that. करते हैं कल से. 55 is due on Monday 21st, which is the third last line. Yes, Vishal, that's very interesting. I'm still keeping a close watch on that 55 cycle, जिसका प्रेशर अभी भी मार्केट पे फिलहाल साइडवेज में हुआ है, नीचे होना चाहिए था अगर इन्वर्जन है तो। एक चीज का ध्यान रखना टाइम पे, 85 वीक के हिसाब से 18,600 अभी भी रेजिस्टेंस मेजर हर्डल है, वो अभी तक निकला नहीं, वो देखेंगे। 55 डेज के हिसाब से हम वो जोन में है जो मंडे ट्यूसडे तक वो जोन खत्म होगा, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हम वो जोन में है तो वो जोन से रिवर्स होता है कि नहीं। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है मार्केट का, एक्सेप्ट कि डेली बेरिश हो चुका है। तो यहां पर मूड तो बन रहा है, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज देखते हैं। एंड 24th को अमावस्या भी है, so देखते हैं मे बी नेक्स्ट वीक हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू दिस थिंग। Nilesh, yes, of course you can do that. You can be a part of the program, no problem on that. I'm just taking a quick poll, guys. Which path you would like to become an expert trader? Which path? You can select your path here. Mentorship on timing the market or things like that. I'm taking the questions. Meanwhile, okay, put carry forward. यहाँ पुट कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते थे, हाफ बुक करके हाफ निकाल दो, या तो फिलहाल मैंने तो कैरी नहीं किया। द रीजन बिंग, या क्लोजिंग जो चाहिए थी वैसी नहीं है, क्लोजिंग शुड हैव बीन बिलो दैट 18,290। निफ्टी फिर से उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो आई एम जस्ट नॉट कंफर्टेबल कैरिंग द पुट ऑप्शन एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट कैरिंग इट। और जो मैंने, देयर आर 3-4 थिंग्स दैट आई हैव डन, आई कांट नाउ टॉक everything right now. I thought of keeping it short. Any other questions, guys? People who are there on YouTube, ensure you are subscribing to my YouTube channel to keep getting that alert when I publish the next video that you get on how to trade the market. So keep ensuring you are subscribing to me on my YouTube channel and also clicking on the like button so that मुझे पता चले यार आपको ये वेबिनार पसंद आया कि नहीं। और गैन लेवल
आपको समझ आया कि नहीं? Fantastic, guys. I'm just ending the poll now. Thank you very much for joining in. It had been a wonderful, wonderful journey. This is Friday at 4 with Ashish Kyal. Or was it interesting what we did today, every one of you? अगर ये interesting है तो we continue with this kind of topics and little more advanced level. Basic के लिए video snippets जो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, डाउनलोड करना ना भूले मेरा ऐप आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल का ऐप, तो वो डाउनलोड करिए एंड देखते रहिए, सीखते रहिए और साथ ही में ट्रेड करेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइज. आई एम साइनिंग ऑफ एंड हैव अ वंडरफुल डे. वेरी इंपॉर्टेंट मंडे. कीप अ वॉच ऑन 18,220. व्हाट वाज द लो टुडे? आई थिंक एग्जैक्टली वहां पर था एंड ऊपर में 18,440. ये रेंज में ट्रेड करो ऑप्शन सेल करके. थैंक यू.